If I could start. So in the last class, we had talked about an important topic, और जैसे मैंने बताया था कि this is one of the most confusing topic. ठीक है, इसमें confusions बहुत सारे होते हैं. So I tried to clarify most of the confusions जितने भी होते हैं हमारे पास जब हम भूल जाते हैं कि हमें permutation करना है, combination करना है, और in most of the cases we just go with the shortcut method. तो वो हमने देखने की कोशिश की थी. Yes, I'll just repeat this part. Like if we talk about permutations, order is important, right? So we talk about order. So permutation जब भी हम बात करते हैं, order is important that you need to remember. Similarly, when we talk about combination, order is not important. Order is important. नहीं होता है, order is not important. ठीक है. So permutation combination में difference यही था. बाकी इसके formulas हमने देख लिए. So let's solve some of the questions and थोड़े बहुत formulas जो हमने last class में पढ़े हुए थे, we'll try to revise them. Let's start with this one. Simon has 5 apples, 3 bananas, and 6 oranges. In how many ways can they be arranged in a row? Right. So taking all together, वही वाली बात सीन है कि taking all together, we have to arrange them in a row. लेकिन क्या ध्यान रखना है? These apples. Let's say this is x quantity of one kind. पांचों के पांचों apple है. So if you are arranging one apple or the another, they will be the same thing. Similarly, banana this is of second kind and orange is this of third kind. So तीन kind की चीजें हैं जिनको हमें arrange करना है. Yes. Try to solve this one. Let me explain you first, then you can solve this. So यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास total fruits कितने हैं. All together we have 5 apples, 3 bananas, and 6 oranges, which becomes 14. So 14 fruits. And now let's forget about apple, bananas, and oranges की अलग-अलग चीजें हैं. All together I have 14 fruits. If I want to arrange these fruits in a row, how many ways? So I can arrange 14 fruits. So there are 14 factorial. You can say 14 factorial ways in which I can arrange this 14 fruits in a row. ठीक है, कैसे समझना है इसको? सिंपली ऐसे समझना है कि भाई पहले में मेरे पास 14 fruits है, दूसरे में 13 बचे, सेकंड चल गो अप टिल 1, ऐसे मेरे पास 14 फैक्टोरियल मेरे पास फ्रूट्स के तरीके हैं जिसको मैं अरेंज कर सकता हूँ. बट नाउ द थिंग इज आई हैव 5 एप्पल्स. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि मैं कौन से एप्पल को अरेंज कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू हैव 5 एप्पल्स जिसको मुझे अरेंज करना है. ठीक है. सो दिस वोंट मैटर ओवर हियर. सिमिलरली bananas and oranges, I have certain quantity of bananas. So for this specific choices of 5 apples, 3 bananas and 6 oranges, तो मुझे इनको अरेंज करना है. सो मेरे पास एक चीज हो जाती है कि ऑब्वियसली सिंस 5 एप्पल्स आर देयर, आई विल हैव 5 फैक्टोरियल चांसेस जिसको मैं नहीं यूज कर सकता. व्हाई? बिकॉज आई द ऑर्डर विल वोंट मैटर कि आपको पहले कौन से एप्पल को डाल रहे हो या बाद बाद में कौन से एप्पल को डाल रहे हो, क्योंकि वो एप्पल इज वन एंड सिंगल थिंग. ठीक है. तो 5 फैक्टोरियल मैं इसमें से डिवाइड कर दूंगा. सिमिलरली आई आल्सो डिवाइड 3 फैक्टोरियल फॉर बनानास एंड 6 फैक्टोरियल्स फॉर ऑरेंजेस. ऐसा एक फार्मूला मैंने लास्ट क्लास में आपको लिखवाया था शायद, right? The possibilities of having where x is of one kind, y is of second kind, and z is of third kind. You can solve this one and you can tell me what is the final answer that you are going to get. One six eight 168. That's correct. I hope it's clear. It's very simple. There is nothing much in this question. This is how we can solve this. Let's move on to the next one and see how we can solve that. Here we are going to talk about chocolates. So same question लग सकता है कि भाई ऐसे कुछ है. Like
we have 4 dark chocolates, 3 milk chocolates, and 5 caramel chocolates, in which we can arrange them. Now, how many selections of the chocolates can be made by selecting at least one of them? At least one has to be selected out of them. ये हर एक की मैं एक एक चूज करूंगा तो मेरे पास कितने चॉकलेट्स बचेंगे? I need to calculate this one. Let's try to understand इसको कैसे solve कर सकते हैं. Does anyone has any idea? तीनों में से एक निकाल देंगे पहले। एक्चुअली ऐसा नहीं होगा. लेट्स सी कैसे करना है. ठीक है, तो पहले मैं डार्क चॉकलेट की बात करता हूँ. राइट, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग डार्क चॉकलेट. नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग डार्क चॉकलेट. डार्क चॉकलेट की मैं बात कर रहा हूँ. तो या तो आई कैन सिलेक्ट, ठीक है, एटलीस्ट वन है, तो देयर कैन बी नन आल्सो, नन आल्सो. पर हम एटलीस्ट तीनों में से कोई एक तो सिलेक्ट करने वाला है. तो अच्छा, अगर मैं डार्क चॉकलेट की बात कर रहा हूँ तो या तो मैं 5 सिलेक्ट करूंगा, सॉरी नॉट 5, 4, मेरे पास मैक्सिमम 4 है. तो या तो मैं 4 सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, या तो मैं 3 सिलेक्ट करूंगा, या तो मैं 2 सिलेक्ट करूंगा, या तो मैं 1 सिलेक्ट करूंगा, या तो मैं एक भी नहीं सिलेक्ट करूंगा. ठीक है, तो मैं कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ? मैं 5 तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूँ. पहले केस में मैंने चार उठा ली, दूसरे केस में मैंने 3 उठाई है, तीसरे केस में मैंने 2 उठाई है, चौथे में 1 उठाई है, पांचवें केस में मैंने एक भी नहीं उठाई. अच्छा, अभी मैं 0 मान के चल रहा हूँ. अभी मैं एटलीस्ट वाली कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा हूँ, बाद में मैं इसको करूँगा. ठीक है, तो मैं बेसिकली मैं 5 तरीकों से इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ. आई कैन सिलेक्ट देम इन 5 डिफरेंट वेज. Let's talk about the second case, the number of ways of selecting the second one, milk chocolates. Milk chocolates. So, इसको कितने तरीके से कर सकते हैं? So again, 3 चॉकलेट है मेरे पास, तो हो सकता है मैं तीनों सिलेक्ट करूं, या 2 सिलेक्ट करूं, या 1 सिलेक्ट करूं, या एक भी नहीं करूं. ठीक है, तो मेरे पास there are total of 4 ways in which I can select. थर्ड की बात करूं, मैं कैरेमल दिया हुआ मुझे. So number of ways of selecting caramel chocolates हो जाएंगे मेरे पास. 5 कैरेमल चॉकलेट्स है, सो देयर चांसेस कि मैं पांचों के पांचों सिलेक्ट कर दूं, या 4 करूं, या 3 करूं, 2 करूं, 1 करूं, या एक भी नहीं करूं. दैट टोटल 6 वेज इन व्हिच आई कैन सिलेक्ट. ठीक है, तो ये तीन तरीके हैं मेरे पास सिलेक्ट करने के लिए. सो टोटल नंबर ऑफ वेज, इफ आई फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ वेज of selecting chocolate, it will be 6 into 4 into 5, or 6 into 5 into 4. That will be total of 120. ठीक है, तो I in 120 different ways I can make the selections. But यहाँ पर क्या हो रहा है? I have this condition, at least one of them is selected. Now what are the chances that none of them have been selected? There will only be one chance जब मैं तीनों में से 0 0 0 select कर रहा हूँ. समझ लो इस चीज को. अगर मैंने इसमें भी 0 किया, इसमें भी 0 किया, इसमें भी 0 किया, तीनों में मैंने 0 किया, so that one case will be there जब तीनों में से ना कोई भी चॉकलेट सेलेक्ट नहीं होगी. So total number of ways of selecting नन चॉकलेट. तीनों में से मैं कोई भी सिलेक्ट नहीं करूं, ऐसा कितनी बार हो सकता है? तो ऐसा सिर्फ एक ही बार हो सकता है, जब मैं तीनों में 0 0 0 सिलेक्ट करूं. क्योंकि अगर मैं लेट्स से इसके अलावा किसी भी केस की आप बात करो, तो मैं अगर किसी एक में 0 करता हूं, तो मैंने इसमें 0 किया, तो हो सकता है इसमें 1 हो, इसमें 2 हो, या अगर मैं दो में 0 कर रहा हूं इनफैक्ट, तो तीसरा वाला जरूरी नहीं कि 0 हो. सो देयर इज ओनली वन केस इन व्हिच ऑल थ्री ऑफ देम विल बी 0. ऑल थ्री ऑफ देम विल बी 0. ठीक है, सो ये मेरे पास केस आ गया एक. नाउ total number of ways of selecting at least one chocolate, right? Number of ways of selecting at least one chocolate. क्या हो जाएगा? जो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज थे 120, उसमें से नन वाला जो केस था वो मैंने माइनस कर दिया.
ठीक है, वो केस मैंने माइनस कर दिया जब मैंने एक भी नहीं सिलेक्ट किया, तो मेरे पास बचेंगे 119 एंड दैट विल बी माय फाइनल आंसर। ठीक, तो अभी यहाँ से ना एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, whenever you have been asked of finding out at least one, so it's very simple, आप टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज निकाल लीजिए एंड नन वाला जो केस है जिसमें कोई भी नहीं हो रहा उसको माइनस कर दीजिए, उसके बचे हुए जितने भी होंगे उसमें एटलीस्ट वन होगा या एटलीस्ट टू होंगे या एटलीस्ट थ्री, उससे ज्यादा ही होगा, ठीक है, उससे कम नहीं होगा। नाउ वी फाइंड आउट दिस केस, एटलीस्ट वाला केस। Fine. Let's see the next one. What is the next question? Okay, this kind of question we had done in the last class, so I'm expecting you to answer. Just try to solve this one and tell me the final answer. एट जीरो सिक्स फोर जीरो। Yes, very good. That's the correct answer. Let's see how we can calculate this answer. In how many ways the word Constantine can be arranged in such a way that all vowels come together. So vowels है वो सब साथ में आने चाहिए. So let's write down this word first. ठीक है, तो कौन कौन सी चीजें याद रखनी है पहले, तो अगर मैं सब वॉवल्स को इकट्ठा कर लूं तो एक, दो, तीन, चार, चार वॉवल्स है मेरे पास, राइट। तो वॉवल का काउंट मेरे पास हो जाएगा चार एंड सिमिलरली कांस्टेंट कॉन्सोनेंट्स का हो जाएगा सेवन, सेवन कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। नाउ ऑल द वॉवल्स शुड कम टुगेदर, तो इन चारों को मैं एक यूनिट मान के चलता हूँ एंड सात कॉन्सोनेंट्स जो मेरे पास आठ है, आठ पैकेजेस हैं, अब आठ यू कैन से कैरेक्टर्स हैं जिसका मुझे अरेंजमेंट बनाना है। सो आठ कैरेक्टर्स इज नंबर ऑफ ways of arranging eight characters will be 8 factorial। ठीक है, ये तो हो गया 8 कैरेक्टर का। अब नंबर ऑफ अरेंजिंग वॉवल्स, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग वॉवल्स, तो चार वॉवल्स है, तो उन चार का एक पैटर्न बनेगा कि पहले मैं चार को ले सकता हूँ, दूसरे में मैं तीन को ले सकता हूँ, तीसरे में दो, 4 फैक्टोरियल यहाँ पर आ जाएगा। अब जब मैं टोटल नंबर ऑफ वेज की बात करता हूँ तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा बिकॉज दीज आर इंटरडिपेंडेंट क्वांटिटीज, राइट। ये हम लास्ट क्लास में बोला था, अगर इंडिपेंडेंट होती है तो हम ऐड करते हैं और इंटरडिपेंडेंट होती है तो मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और चीज आती है, इससे मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किस चीज को, जिन जो टर्म्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक, दो थिंग व्हिच आर ऑफ द सेम काइंड। जैसे कि आप बात करो यहाँ पर एन और एन और एन, तीन एन है मेरे पास, एन इज गेटिंग रिपीटेड थ्री टाइम्स, मैं थ्री फैक्टोरियल से इसको डिवाइड करता हूँ। थ्री क्वांटिटीज आर ऑफ द सेम काइंड। सिमिलरली इफ यू सी टी एंड टी, टी इज गेटिंग रिपीटेड, तो यहाँ से मैं टू फैक्टोरियल से भी इसको डिवाइड करता हूँ। If you solve this one, 8 factorial, 4 factorial into 3 upon divide by 3 factorial multiplied by 2 factorial, you're going to get the answer 806। ठीक है, तो हर एक चीज को समझना कौन कौन सी चीजें हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव कंसीडर्ड दिस वॉवल्स टू बी अ सिंगल एंटिटी,
कॉन्सोनेंट्स मैंने अलग अलग लिए हुए, लेकिन वॉवल बिकॉज दे आर सपोज टू बी टुगेदर, तो इसलिए मैंने उनको एक एंटिटी ले लिया और कॉन्सोनेंट्स ऐड कर दिया। नंबर ऑफ अरेंजिंग दिस टोटल एंटिटीज 8 फैक्टोरियल हो जाएंगे मेरे पास। अब वॉवल का जो चार वॉवल से ग्रुप था उनको भी अरेंज करने के चार तरीके हैं, ठीक है, सॉरी 4 फैक्टोरियल तरीके हैं जिनको मैं अरेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो पहले कौन सा आएगा दूसरा आएगा उस पर डिपेंड करता है। और जब हम अरेंज कर रहे थे तो एन जो था वो 3 बार आया था, पहला एन है, दूसरा एन है, तीसरा एन है, कोई भी मतलब कोई भी है, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो 3 फैक्टोरियल से हमने इसको डिवाइड कर दिया। एंड सिमिलरली टी भी जो है वो भी 2 बार अपीयर कर रहा है, सो वी हैव डिवाइडेड इट बाय टी 2 फैक्टोरियल्स। ऐसे हम इसका आंसर निकालते हैं। In how many ways can the word Constantine against the same word can be arranged such that all the consonants come together? Try to solve this one. क्या आता है आंसर मुझे बताइए। सर 403200 4,03,200। चलो देखते हैं। सर 50400। Yes, sir. 50400. I got the correct answer in chat box. Let's see how this can be done. So the word is Constantine again. जितना हमने लास्ट क्वेश्चन में देख लिया था, I'll just start with the that part only. कि vowels जो है वो मेरे पास 4 हैं, कॉन्सोनेंट्स मेरे पास 7 है, ठीक है, टोटल 11 है, 11 है। Now in this case I will be considering this consonants to be one group, ठीक है। तो टोटल मेरे पास ग्रुप्स कितने हो जाएंगे, टोटल एंटिटीज इफ आई टॉक अबाउट, तो 4 वॉवल्स हैं और एक ग्रुप है, टोटल 1 + 4 यानी कि 5। और इनको अरेंजिंग नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे मेरे पास अरेंजमेंट के, हो जाएंगे 5 फैक्टोरियल, ठीक है। सेम चीज 5 फैक्टोरियल तो मेरे पास हो चुका है। अब कॉन्सोनेंट का जो ग्रुप है उसके अंदर 7 मेरे पास अलग अलग कॉन्सोनेंट्स हैं, एंड उनको अरेंज करने का तरीका हो जाएगा नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग कॉन्सोनेंट्स, अरेंजिंग कॉन्सोनेंट्स वो हो जाएंगे मेरे पास 7 फैक्टोरियल, बिकॉज उनको अरेंज करने के 7 तरीके हैं, ठीक है। तो ये दो तो हो गए। अगेन आई विल टॉक अबाउट द वेज, द नंबर ऑफ वर्ड्स व्हिच आर रिपीटिंग, तो वो तो सेम रहने वाले हैं, वो तो पिछली बार कि जितने थे उतने ही रहने वाले हैं। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे यहाँ पर, 5 फैक्टोरियल रहेगा, 7 फैक्टोरियल रहेगा, ये दोनों चीजें तो है, लेकिन इसमें जितने बार रिपीट हो रहे थे कौन से, एक हो रहा था एन जो 3 बार हो रहा था, और एक है टी जो 2 बार हो रहा था। तो सॉल्व दिस वन, we'll get the answer 504, that's the correct answer. Let's try to see the next one, next question. Let's try to solve this one.
So 22. 21 is the correct answer. Yes. Fine. Let's see how we can do this. So question में हमें क्या दिया हुआ है? It has been given about permutations. Now if you guys remember the formula for permutation that we had discussed in the last class, that was NPR equals to n factorial upon n minus r का factorial. So ये formula हमारे पास होता है. Let's substitute the value. So पहले केस में मुझे दिया हुआ है 10 factorial upon 10 minus 5 का factorial. This plus 4. Now this dot basically means multiplication. Then 10 factorial upon 10 minus 6 का factorial. This is equals to k times 10 factorial upon 10 minus 5 का factorial. r की वैल्यू यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 5 है. इसके अकॉर्डिंगली आ गया. So numerator I have 5 everywhere. Sorry, 10 everywhere. So 10 factorial upon 5 factorial plus 4 into 10 factorial upon 4 factorial is equals to k times 10 factorial upon 5. ठीक है, इसको सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं. व्हाट आई विल डू, आई जस्ट मेक इट वेरी शॉर्ट. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आई विल मल्टीप्लाई दिस डिनोमिनेटर. इस डिनोमिनेटर को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से. ठीक है, टू मेक माय कैलकुलेशंस इजी. अगर डिनोमिनेटर को अकेले को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, सो आई नीड टू मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर बाय 5. लेट्स मेक 5 मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को 5 मल्टीप्लाई किया. दिस मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल इक्वल्स टू k टाइम्स 10 factorial upon 5. So 5 into 4 factorial will be equal to 5 factorial itself. So equation मेरी ऐसी बन जाएगी by 10 factorial by 5 factorial plus 4 into 5 numerator में हो जाएगा 20 into 10 factorial upon 5 into 4 factorial हो जाएगा 5 factorial equals to k times 10 factorial upon 5. अब आप देख रहे हो तो 10 factorial by 5 factorial is getting common ले लेते हैं. So it will become, तो मेरे पास बचेगा 1 plus 20 is equals to 10 factorial by 5 factorial multiplied by k. So ये 10 factorial by 5 factorial will get cancelled and the value of k simply becomes 20 plus 1, that is. You can expand it, you can even इसको यहाँ पर ले जाकर आप कॉमन लेकर कर सकते हो. This will also give you the same answer. इसमें कुछ अलग नहीं आने वाला. Just simple technique to shorten the calculation. Okay, let's see the next one. क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया हुआ है. जस्ट ट्राई टू सॉल्व दिस वन एंड टेल मी द आंसर क्विकली. Thank you, sir. Five C3. Solve 5c3. So 10. Actually, it should be 10. How many triangles can be formed by joining the vertices of a pentagon? कितने हैं? And will be equal to 5. Vertices, number of vertices will be 5. मुझे triangle बनाना है. Triangle I will be having 3 corners, right? So again, when we are forming a triangle, order is not important. ठीक है, तो आप चाहे पहले कॉर्नर को सिलेक्ट करो, चाहे आप थर्ड कॉर्नर को सिलेक्ट करो, ऑर्डर हमारे पास इंपॉर्टेंट नहीं होता. कहने का मतलब क्या है, वी विल बी यूजिंग कॉम्बिनेशंस. कॉम्बिनेशंस कैसे यूज करेंगे? दिस विल बी NCR, दैट इज 5C3. दैट इज द करेक्ट आंसर. 5C3. अच्छा, NCR का फॉर्मूला यू शुड नो, यू शुड रिमेंबर NCR. NCR equals to n factorial upon r factorial multiplied by n minus r. ये होगा तो this will become 5 factorial upon r, that is 3 factorial upon 5 minus 3 यानी कि 2 factorial. So we get
3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो 4 into 5 divided by 20 divided by this will be this will be our final answer. So these were some of the questions related to permutations and combinations. Now we are going to start with the next topic जो आज हमें चालू करना था, that was related to progressions. Progression is one of the things जिसके अंदर से questions आते हैं, बहुत बार आते हैं. उस टाइम क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, देयर आर नो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस. और इसके प्रोग्रेशंस के बारे में वैसे भी आप मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ोगे, जनरली मैथमेटिक्स के अंदर आप पढ़ोगे उसके बारे में डिटेल में. बट स्टिल देयर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस जो हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स यू कैन कवर ओवर दैट. I'll talk about progressions. The first type of progression that I'm going to talk about is arithmetic. What happens in the case of arithmetic progression? We have something known as the first term. A. A is known as the first term of your progression. So पहला जो टर्म होता है मेरे पास A आता है. Second term is क्या होता है? It is incremented by certain difference D. ठीक है. What is D? D is known as your common difference. D is known as your common difference. अच्छा, थर्ड टर्म निकालने के लिए मैं D इसमें एक और बार ऐड करूंगा, तो D plus D यहाँ पर हो जाएगा 2D, then 3D. This is how this progression goes on. So let's say at any point of time I need to find out the nth term of arithmetic progression. कभी भी nth term हमें निकालना होता है. This is equals to first term A plus n minus 1 into D. This is the first formula that you should remember. A plus n minus 1 into D. अच्छा, इसका एक और फॉर्मूला है. ओके, नहीं चलेगा अभी के लिए नहीं. Then this is about nth term of AP arithmetic progression. The sum, if I want to find out sum of n terms, उसके जो हमारे पास फॉर्मूला है that is equals to, इसको हम Sn बोलते हैं usually, n by 2 2a plus n minus 1 times d. And sometimes this is also given by first term, that is a plus last term n, into n by 2. यहाँ से हमें ये चीज मिल जाती है. This also is the formula for sum of n. जहाँ पर जो दिया हो क्वेश्चन के अंदर उसके अकॉर्डिंगली we can use the formula. Over here you should remember that L is the last term. So बहुत बार अगर हमें number of terms ना देकर last term दिया हो directly, so उस केस में हम ये formula use करके arithmetic progression निकाल सकते हैं. Let's talk about the next type of progression, that is your geometric progression. What is geometric progression? In geometric progression, we have the first term given by A. Obviously, A जो होता है that is your first term. To obtain the second term, we multiply the first term by a certain number known as R, and this R over here is known as common ratio. This is known as common ratio. To get the third term, we multiply this term again by R, so this become R into R, यानी कि R square, R cube, and this is how the series goes on. So at certain point of time, if I want to find out what is the nth term over, nth term given by a n equals to a e to the power a into r e to the power n minus 1. Simple formula that is Chinese. Over here when we are talking about ratios, तो ratios हमारे पास दो तरह के होते हैं, दो तरह के. Common ratio, this value can be greater than 1, this value can be less than 1. So what is the difference when we have value greater than 1 and what is the difference when we have value less than 1? Can anyone tell me? I'm expecting some answers. So there is some change in formulas, like sum of n numbers.
That is one of the things. That's true. Very good. Anything else? The sequence will be increasing and sequence will be decreasing. Very good. Sequence will be increasing and sequence will be decreasing. So when we have r, the value of r to be greater than 1, तो r की value 1 से ज़्यादा है, so our sequence will keep on increasing. उसकी value हमेशा increase होती है. कहने का मतलब क्या है, 2 थी तो 2 से 4 हो गई, 4 से 8 हो गई, 8 से 16 हो गई, so it is continuously increasing. और ये कितनी जाएगी, ये infinite terms तक जाएगी. ठीक है, but it is never going to add, तो ये जो है ये infinite जाने वाली. But when r is less than 1, so less than 1 कहने का मतलब है 0.5 की अगर मैं बात करता हूँ, so if I start from 2 and 1/2 मैंने रेशियो ले लिया which is less than 1, so 2 से 1 होगा, 1 से 0.5 होगा, 0.5 से 0.25, 0.125 ऐसे कम होता जाएगा, so it keep on decreasing. Although this also is considered to be infinite only, right? But at certain point of time we say कि अगर ये decrease होती जा रही है, so at certain point of time this particular series, that is an, for some value of n it will go to 0. और ये an कौन सा होता है, I'll tell you. That infinity, if the value of the term becomes infinity, so the infinite term जो होता है इसका वो होता है 0 होता है, बस ये वैल्यू डिक्रीज होते जा रही है, तो डिक्रीज होगी कहीं पे तो खत्म होगी, वो हम मान के चलते हैं भाई वो 0 होती है. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द सम ऑफ n terms, sum of n terms of g. सम का फॉर्मूला भी डिपेंडिंग अपॉन रेशियो, जैसे बोला, यस दैट्स करेक्ट, ये अलग अलग होता है. फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट this one, 1 upon r is to the n 1 minus r. तो 1 minus r अगर नीचे में बोलूं तो ये वैल्यू तभी पॉसिबल है when the value of r is less than 1. अगर in case if the value of r is greater than 1, so it will become, यहाँ पर जो होगा r की वैल्यू जो होगी this will be written first, so it will be a into r is to power n minus 1 upon r minus 1. ये कब होगा, जब r की वैल्यू will be greater than 1. So r minus 1 is positive. In this case 1 minus r is positive. So ऐसे याद रखना है इसको सिंपली कि भाई r जो है that should be positive. इसके अंदर एक और चीज आ जाती है, जैसे हमने देखा कि there is one chance कि r की वैल्यू ज्यादा है, so it will keep on increasing. But when we talk about कि r की वैल्यू कम है, it is less than 1, so it will decrease. It will decrease and at certain point of time it will become infinite. तो ऐसा कोई भी दिया हुआ हमें जिसमें r की वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, so in that case we can find out the sum of this infinite g. Sum of infinite g. तो sum basically क्या बोल रहा है that for the infinite term सम को कैसे दे सकते हैं, तो हम इसका क्या करते हैं, बेसिकली जो सम का जो फॉर्मूला, सॉरी ये सम का फॉर्मूला होता है, इसमें हम वी पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वल्स टू इंफिनिटी एंड वी कंसीडर दिस इनफिनाइट टर्म टू बी 0. तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं वी गेट द सम ऑफ इनफिनाइट एक्सप्रेशंस, इनफिनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r. सिंपली कंडीशन कब एप्लीकेबल है, व्हेन द वैल्यू ऑफ r इज लेस देन, ये तभी एप्लीकेबल है, इट इज नेवर एप्लीकेबल फॉर r इक्वल टू 1 और r ग्रेटर देन. ये हो गया. Now there is one more expression. There is one more expression in which we are interested, and that is known as a harmonic progression. Oh, sorry, harmonic, yes, harmonic mean और harmonic progression. तो हम harmonic mean ज़्यादा consider करते हैं. जब हम बात करते हैं mean, we have three types of mean. These are part of progression itself. So we studied inside progression. और means की बात हम आगे करेंगे, average के क्वेश्चन हम देखेंगे. We have three types of mean. The first is known as your arithmetic mean. Second is known as your geometric mean. And the third one is known as your harmonic. तीन टाइप के हमारे पास मीन होते हैं. समझने की कोशिश करते हैं कि अरिथमेटिक मीन क्या होता है. अरिथमेटिक मीन इज सिंपल. व्हाट यू डू इज यू टेक द नंबर्स, यू ऐड देम अप, x1 x2 x3 जितने भी नंबर है उन सबको आपको ऐड कर देना है. लेट्स से अप टू xn नंबर है मेरे पास, तो जितने भी नंबर थे
लेट्स से n नंबर्स है तो मैं n से इसको डिवाइड कर दूंगा, विल गेट द मीन. दिस इज नोन एज अरिथमेटिक मीन. Mathematically it is represented as summation of I equals to 1 to n. किसका summation है xi का, this thing divided by n. और इस ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन में भी सेम चीज होती है, लेकिन यहाँ पर हम ऐड नहीं करते, यहाँ पर हम करते हैं मल्टीप्लाई. x1 into x2 into x3 up to xn. जितने भी नंबर होंगे, सपोज n नंबर है, सो आई फाइंड आउट nth रूट ऑफ दिस नंबर्स, nth रूट ऑफ दिस नंबर. अच्छा, जो मल्टीप्लिकेशन है, जो समेशन जो होता है इसका साइन तो हम सिग्मा देते हैं, जो मल्टीप्लिकेशन होता है इसका साइन हम देते हैं कैपिटल पर. ये हो जाएगा आपका xi. इसका मल्टीप्लिकेशन करना है मुझे फ्रॉम I इक्वल टू 1 टू I इक्वल टू n, तो ये प्रोडक्ट हो जाएगा इसका. एंड दिस होल थिंग जो भी आंसर आ रहा है इसका मुझे nth रूट लेना है, सो रेज़ टू द पावर 1 बाय n, और यू कैन फाइंड आउट सिंपली से nth. टॉकिंग अबाउट हार्मोनिक मीन, हार्मोनिक मीन में क्या होता है, सो इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक मीन. इस केस में वी टेक what we do is we take the reciprocal of these numbers. We try to take the reciprocals of these numbers and उन reciprocals को we add them up and then we find out their mean. और जो since we have taken the reciprocal तो उसको हम वापस से एक बार उल्टा कर लेते हैं so that we get the desired number. What I mean to say is, let's say मैं नीचे से चालू करता हूँ. First of all, let's take the reciprocal of each of the number and add them up. So sigma I equals to 1 to n, reciprocal कर रहा हूँ, ठीक है. So become 1 by xi. और simply अगर इसको लिखना चाहिए इससे अच्छा से लिखें, इससे पहले लिख रहे थे हमने क्या किया, 1 by x1 plus 1 by x2 plus 1 by x3, ये हमने सब निकाल दिया अप टू कहाँ पर 1 by x, और इसका मैंने निकाला है मीन, ठीक है, डिवाइड बाय n. ये तो कर दिया, लेकिन मैंने रेसिप्रोकल लिया था तो इसको मैं उल्टा कर देता हूँ. जब मैं इसको उल्टा करूंगा तो जो n जो है इससे मैंने इसको डिवाइड किया था, दैट विल कम इन द न्यूमरेटर पार्ट, ये आपका आ जाएगा न्यूमरेटर. ये हो जाता है आपका हार्मोनिक. मतलब मुझे रिप्रेजेंट करना हो, सो रिप्रेजेंट इट लाइक n डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू n 1 अपॉन x, रेसिप्रोकल किया. Now these means, these arithmetic, geometric and harmonic means, they are related to each other, and that is one thing you should remember. So the relationship between arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean is as simple as that. सबसे जो आपका जो geometric mean होता है, अगर आप उसका square करते हो, that is equivalent to the product of arithmetic mean and the harmonic mean. ये आपको याद. This thing you should always remember to be direct question बनते हैं, direct question बनते हैं. So आपको सर कोई प्रीवियस स्लाइड दिखाएंगे. Sure. सर तो इसमें यूजली क्या होता है कि आपको कोई भी दो चीजें दी जाएंगी, तीसरी चीज आपको निकालनी होगी, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है. दिस विल बी वेरी सिंपलर. और एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो आपको याद रखनी है, दैट योर अरिथमेटिक मीन इट इज ग्रेटर देन योर ज्योमेट्रिक मीन, इट इज ग्रेटर देन योर हार्मोनिक मीन. So the lowest is your harmonic mean and the highest or the greatest is your arithmetic mean. ठीक है, तीन नंबर अगर मुझे दिए हो कि उनमें तीनों में से कोई भी एक अरिथमेटिक मीन है, कोई ज्योमेट्रिक मीन है, कोई हार्मोनिक मीन है, और सिंगल सेट ऑफ नंबर्स, सेम सेट ऑफ नंबर्स, तो वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि अरिथमेटिक मीन कौन सा होगा, ज्योमेट्रिक मीन कौन सा होगा, हार्मोनिक मीन कौन सा होगा. ठीक. These are some things related to progression that you should remember. Now give me 1 minute, I will be sharing my screen once again. The screen is not visible. Yes, give me 1 minute, I will be sharing it. Now let's start with some of the questions. Let's try to solve this one.
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, you just need to substitute the values and I'll tell you how this can be done easily. Thirty-five. Let's let's get back to the question. What is the 10th term of an arithmetic progression whose fifth term is 19 and common difference up to the hour? So basically fifth term has been given to you. A5 is 19 and D की value दी हुई है 4. So just substitute it in the values. So you get A5 will be equal to A plus n minus 1. n क्या है यहाँ पर 5 minus 1 into D. इसकी वैल्यू दी आपको 19 के बराबर. So A will be 4 times D. अच्छा D की वैल्यू अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ वो मुझे दी हुई है 4. 19 हो जाएगा. This will give me 9. A equals to 19 minus 4 into 4 is 16. So यहाँ पर 16 चला जाएगा. So this will be equal to 3. A की वैल्यू है, D की वैल्यू है. Now you can calculate the 10th term. So 10th term will be equal to A10 which is equals to A plus 90 and 3 plus 9 into 4. So 9 into 4 is 36. 36 plus 3 39. आपको सिंपल है, कुछ नहीं करना है. जस्ट यू नीड टू फाइंड आउट ए तो ए निकालना है, डी तो दिया हुआ है. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. ओके, दिस इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ट्राई टू सॉल्व दिस. इन दिस केस डी नहीं दिया हुआ है, ठीक है. यहाँ पर हमें डी नहीं दिया हुआ है, सो यू नीड टू फाइंड आउट द डी. Forty-six. Let's see correct. See, let's try to solve this one. In an AP, the 10th term is 86. So A10 दिया हुआ है मुझे. A10 basically means A plus n minus 1. यानी कि 10 minus 1 यानी कि 9. So A plus 90 मुझे दिया हुआ है 86. And 86 term. 86 term जो हो जाएगा that will be equal to A plus n minus 1. 86 minus 1 यानी कि 85. ये आपको दिया हुआ है 10 के बराबर. ठीक है. ठीक है, फर्स्ट टर्म दोनों में सेम है, सो यू कैन सिंपली सब्ट्रैक्ट दीस टू इक्वेशंस. आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. दैट विल मेक इट वेरी इजी. So 9 minus 85 it will become minus 76 times d और 86 minus 10 again 76. यहाँ से जो d की वैल्यू आ रही है वो हो रही है minus 1. ठीक है, तो minus 1 मतलब d जो है हमेशा एक करे कम होते जा रहा है. Now if you talk about a, let's consider to be 1 and मुझे a निकालना है. So equation 1 में बात करते हैं. equation 1 में a plus 9 times minus 1 will be equal to 86. इससे मुझे बन जाएगा a will be equal to 86 plus 9 यानी कि 95. And this I can use further. So इसको use करते हैं to find out the
50th टर्म जो हमसे पूछा था, so A50 will be equal to A plus 49D, यानी कि A जो है हमारा वो तो है 95 प्लस 49 इंटू माइनस 1, यानी कि 95 minus 49, that will be equal to your 46. 46 is your final answer. Simple, you just need to find out the value of A and D. You can solve this kind of question. Let's move on to the next one. Okay, try to solve this. -9. -9. So we can we have been given the sum of first 21 terms. ठीक है, first 21 terms हमें दिए हुए SN, यानी कि S21 in this case is has been given. SN अच्छा होता क्या है वैसे, n by 2 2a plus n minus 1 into d, ये होता है. This is equals to 107. ठीक है, आपको फर्स्ट टर्म निकालना है, बहुत सिंपल है, जस्ट यू नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू. n की वैल्यू है 21 by 21, तो 21 by 2 2a plus 21 minus 1 into d की वैल्यू दी हुई है 6, this becomes 1071. यहाँ से हो जाता है 2a plus 20 into 6, this will be equal to 1071 into 2 divided by 20. ठीक है, so if you solve this one, this will be somewhere नीचे कट कर सकते हो, 7 से कर सकते हो 153 and you can split by 3, so it gets 51. So 51 into 2 is 102, और यहाँ पर ये है 20 into 6 हो जाएगा 120 में हो जाएगा आपका इक्वल टू -18, और यहाँ से a की वैल्यू हो जाएगी -18 by 2, यानी कि -9 and common difference is 6. Try to solve this one.
Yes, correct. Find out the 10th term of the geometric progression and the sum. दोनों चीजें निकालनी है. A की वैल्यू दी है, कॉमन वैल्यू रेशियो की वैल्यू दी है, सो A 10 हो जाएगा, A r raised to the power 9 यानी कि 35 2 raised to the power 9. So if you solve this one, you will get the value 17920. 17920 is the correct answer. If you talk about sum of 10 terms, r की वैल्यू 1 से ज्यादा है, so we'll start with greater than 1. So a r raised to the power n minus 1 upon r minus 1. यानी कि a तो है 35, r की वैल्यू है 2 raised to the power n, n is 10 minus 1 upon 2 minus 1. ठीक, तो इसको हमें सॉल्व करना है एंड डिनोमिनेटर 2 minus 1 हो जाएगा, डिनोमिनेटर 2 minus 1 हो जाएगा. न्यूमरेटर में आपको निकालना होगा 2 raised to 10 minus 1. 2 raised to 10 क्या होता है? So it's 1024. 35 into 1024 minus 1 यानी कि 1023. This thing you need to find out. Please multiply this and tell me the answer. 35805. Very good. That is correct. 35805. That's the correct answer. Since value substitute करनी है, there is nothing new in this question. So we'll move forward without wasting much of the time. Okay. Sixth and 10th term दिया हुआ, you are supposed to find the GP. अच्छा ऐसा नहीं होगा क्वेश्चन में, ये तो जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस. आपको जीपी के 4 सेट दिए होंगे, आपको बताना होगा which one is the correct. Try to solve this one.
Okay, let's see what is the answer. The sixth and tenth term of a GP has been given. 70 and 17920. So sixth term A6 and A plus R raised to 5 has been given. That is your 70. And A10, that is A into R raised to the power 9 has been given 17920. हमें निकालना है GP. Let's say this is first equation. Second, we will do second divided by 1. Should give me R is to 9 divided by R is to 5. 17920 divided by 70. So if I cancel that, you'll get R raised to 4. 9 minus 5 4 हो जाएगा. And this will become 16. 6 I guess. 4 की power अगर मैं 4 करता है, it will get 256. So the value of R will be 4. Right? Because 4 is to the power 4 is 256. R equal to 4. अच्छा, R की value 4 आ गई. I can also find out the value of A over here, which will be 70 divided by R raised to 5. Right? और raised to 5. Somewhere near 1024 or 35 back. 5 1. This is our first term. अच्छा, यहाँ पर ना what is the catch? The catch is since it is r raised to 4 is equals to 4 raised to 4. जब मैं इसका square root लेता हूँ, that's the value of r will be having two parts. It can have either plus 4 or minus 4. So depending on this, I'll be having two values of a. Right. The first value of a will be 35 by 512. The second value of a will be minus 35 by 512, depending upon the value of r. ठीक है, उसके हिसाब से आपकी दो सीरीज बनेगी और इसको आपको क्या करना है, 4 से you have to multiply it for the next term. So if you multiply it by next term, it will become 128. This will also become 35 by 120. ठीक है, तो ये ऐसे आपके पास ये जो सीरीज बनेगी, you need to multiply it by. Okay, let's move on to the next one. Yes, what is the geometric mean of the following set of data? Geometric mean we already know क्या होता है. You just need to apply the formula over here. Geometric mean is the nth root. अब यहाँ पर n कितने हैं? We have 5. So fifth root of 5 into 6 into 8 into 12. Can you solve this and tell me the answer? So 5.65. Yes, that's correct. 5.65. Let's move forward. Next one. In this you can have to change the harmonic mean. अच्छे क्वेश्चन वैसे पूछे नहीं जाते हैं. Just for the practice, just to know कि आपको ये फॉर्मूले याद रहे. I included this one. 6 because number of terms. पर यहाँ पे हो जाएगा 1 by 8 plus 1 by 9 the example I gave, never make a mistake of solving this manually. This calculator had, you can use the fractions in the calculator, use those fractions and try to solve this. अभी manually calculate करने मत जाना, it will take a lot of time.
Yes, that's the correct answer. I've got in the chat box. It will be 7.56. Near to 7.56. 7.56 will be your correct answer. You can solve this and check it out. Just remember the formula होता क्या है n upon summation of I equal to 1 to n 1 upon x. Reciprocal of individual. Can you show the previous slide? This one. Sir. Geometric mean का हमारा formula क्या था? It's the product of xi from I equal to 1 to n and this thing raised to the power 1 upon n. Yes. This term of AB 3, 15, 27, 39 will be 132 more than its 54th term. The 67th is a Let's see what is the correct answer. तो हमें दिया हुआ है which term of this AP will be 132 more than its 54th term. ठीक है, तो हमें n की वैल्यू बेसिकली निकालनी है. We'll try to find out. हमें दिया हुआ है a की वैल्यू. A is given as 3. अच्छा डिफरेंस भी दिया हुआ है हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस is 15 minus 3 you can find out or 27 minus 15 and the case आपको 12 दिया. अब we need to find out an such that it is equal to a54 plus 130. ये हमारा क्वेश्चन है. अच्छा an क्या होगा? a plus n minus 1 into d. This is equals to a54 यानी कि a plus 53d plus 130. ठीक है, तो ये इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है एट a. excuse me, sir. Yes. Sir, it's asking which term. Means n they are asking. Yes, we are going to find out n, right? 65. See over here in this equation, the let's say nth term, right? An. Okay, which term? Yes, that is what we are solving, right? Yes, sir, we can do it like that. Fine. So please solve. So what we have is a plus n minus 1 into d. This a will get cancelled with this one. So we have n minus 1 into d equals to 53d plus 132. Now I need to solve this one. D की वैल्यू मुझे पता है. D की वैल्यू is 12. So n minus 1 12 53 into 12 plus 132. अच्छा यहाँ पर इसको ना शॉर्ट में खत्म करते हैं. So n minus 1 जो 12 है ना that I'll take common over here और इस इक्वेशन से मैं 12 कॉमन ले लेता हूँ. So मेरे पास आ जाएगा 53 plus 32 में से अगर 132 में से मैं 12 कॉमन लेता हूँ I'll be left with 11. 12 दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा. n minus 1 will be equal to 64 और n will be equal to 65. ये जो दोनों टर्म थे यहाँ से मैंने 12 जो है कॉमन ले लिया. Sir, can we do like 54 term and 132 will be 11 times d, so 54 plus 11 we will get. Yeah, that is also fine. That is also correct. Like, and yes, d is equals to 12, so that we also that we can use it.
So let's move on to the next one, and let's solve this one. This will be the last question for the day. Rest of the question we'll do in the next class. So try to solve this one. 178. Let's see. We need to find out the 31st term whose 11th term, that is A11 has been given. That is A plus 10D has been given. That is 38. And 16th term, A16, that is A plus 15D has been given as 73. You can separate them easily. So you get minus 5D D will be equal to 7. You got the value of D, let's substitute in equation 1. So in equation 1, you substitute this value, you get A plus 10 times 7, like 70 equals to 38. A equals to 38 minus 70. So I'm going to be 32 minus 70. Now it's supposed to find out the 31st term, A 31. So it will be minus 32 plus 30 times D. That is 30 times 7. So minus 32 plus 30 times 7. 210 minus 32, that is what we need to find out. 178. So, okay. This is the last question that we are supposed to do today. Next class, we'll do some more portions related to progressions, and then we'll start with the next interesting topic, that is probability. So, if you have any doubt, you can ask or you are free to leave.